वेलकम टू इन्फिनाइट इंस्पिरेशन। मैं चंदा दुर्गानी आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आज भी हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में शेयर करने के लिए आज हमारे गेस्ट है किरण जी। वैसे तो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, लेकिन आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि इंजीनियरिंग के साथ साथ इंसान अपने पैशन में ग्रो करता है। उन्हें डांस का बहुत शौक है एंड शी इज बीन ग्रोइंग इन हर जर्नी इन डांस प्रोफेशन. So let's start with a beautiful talk show with Kiran ji. Hare Krishna Kiran ji. Hare Krishna, How are you? Chandaji. I'm good. How are you? I'm good, thank you. Welcome to our show. We are glad that you are here. Okay. So, where are you from? And we would like to know your name. Where are you from? And what is your background? Okay. So, firstly, thank you for inviting me to this show. Thank you so much. I am Kiran Khade. By profession, I'm electronics and telecommunication engineer. I'm basically from Nasik, born and brought up in Nasik. Okay. But since childhood, I was more inclined towards dance. And today as a profession, I'm a dancer. I proudly can say that. Okay, that's good. So, how is the journey from being an engineer to being a dancer? Do you have any regrets? कि, oh, इतना पढ़ने के बाद it is just the passion which brings you, towards more betterment in your both the passions together. Yes. So I don't have any regrets of switching my career from engineering to or as a dancer. And this wasn't designed. मुझे खुद को भी नहीं पता था कि I'll become an engineer and later on I'll switch my profession into this thing. But ये सारी चीजें होती गई because this was all destined. I believe in this thing. Initially, when I started with my dance, I was 8 or 9 years old. I started with one workshop and started learning from my guru, Dr. Sangeeta Pedkar. And since then, I don't know how I got so much attracted towards dance. I feel that there was some spiritual connection which I always felt with my dance. And that was the reason actually why I couldn't stay away from dance because I've been a spiritual since my childhood. Yeah. So later on in my growing up years, things were becoming more difficult क्योंकि पढ़ाई बैलेंस करना एंड इनिशियली तो ये सब नहीं था. मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि आई टेक डांस एज माई प्रोफेशन. शुरुआत में तो एज अ हॉबी ही मैंने उसको स्टार्ट किया था कि आई लव डांसिंग, सो चलो लेट अस एनरोल फॉर क्लासिकल डांस. बट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, when I started realizing that people are not accepting dance as a main profession, as their main profession. And this thing started from my own family. I did my engineering because my dad wanted me to be an engineer, frankly speaking. Okay. Yeah. And I did it for my dad. But then मेरी फैमिली भी मेरे डांस को एज अ हॉबी ही देखना चाहती थी. दे डिड नॉट वांटेड मी टू स्विच माय प्रोफेशन एज अ डांसर. So things started becoming more complex after my 12th standard because then later on I took my admission for engineering and मेरा थोड़ा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एकेडमिक्स में स्कोर्स मेरे अच्छे नहीं आए थे. So at that time I realized this jerk that my family was not supporting me. Supporting as in कि you take a break from dance and later on you can again resume. And at that time I wasn't able to explain them कि I cannot stay away from dance. Because somewhere I was so much connected with dance that if dance was there, I was able to do other things like my academics or the daily, whatever. All the activities which I was doing in my daily routine. I used to stay very much disturbed at that time, but सब जगह से मुझे इतना ऑपोजिशन मिला डांस के लिए कि नो यू विल हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू टेक अ ब्रेक एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स. सो देन लेटर ऑन इवन आई सेड कि ठीक है चलो पहले एकेडमिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट माय इंजीनियरिंग फर्स्ट एंड अगेन आई विल रिज्यूम विद माय डांस. इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ एंड देन वन डे
I went to my guru and I was like, Didi, इंजीनियरिंग जितना टफ था, आई डिड माई आई मीन टेक्निकल था, मेरा कोर बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग में, इट इज टेक्निकल, इट वॉज ऑल्सो नॉट दैट ईजी फॉर मी टू डू इंजीनियरिंग बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू डू इंजीनियरिंग, स्टिल आई डिड दैट and with good scores. And later on, I expressed this thing to my guru that जितना इंजीनियरिंग मेरे लिए टफ नहीं था, उतना टफ डांस से दूर रहना था. And I started, I mean, I don't know, I just started crying in front of her. That no, I just don't want to stop my dance now. जितना भी मैंने इन 3-4 साल में डांस से दूर रही हूँ, that was enough for me. Now I want to resume with my classes and I want to complete my journey in dance. ये डिग्री के लिए जो मैंने सर्टिफिकेशन के लिए इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, दैट इज ओके, बट देन फ्रॉम देयर आई रिज्यूम्ड विद माय क्लासेस एंड देन लेटर ऑन उसके बाद भी आफ्टर 1 year आई गॉट अ जॉब इन कॉर्पोरेट. आई वाजंट ट्राइंग एक्चुअली, बट देन स्टिल फैमिली की तरफ से भी था कि यू शुड ट्राई. एंड तब तक मेरा डांस में भी आई जस्ट रिज्यूम्ड विद माय क्लासेस आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. तो वो सब ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला था मुझे. सो आई स्टार्टेड हंटिंग अ जॉब एंड कॉर्पोरेट में मुझे जॉब मिल गया. व्हेन आई वाज डूइंग 9 to 5 का जॉब, that time also I was not finding that happiness in doing dance. At that time, though, I was earning quite a good amount, monthly salary. I was earning handsome amount. लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी. एट एंड ऑफ द डे आई यूज टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सब घर में चिड़चिड़ करना मम्मी पापा के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर, सब निकलता था वो फ्रस्ट्रेशन मेरा. आई वॉजंट हैप्पी. देन आई स्टार्टेड, आई मीन तभी मेरा 2019 में जब नृत्य योग सूत्र डांस थेरेपी का दीदी ने लॉन्च किया प्रोग्राम, आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन दैट ऑल्सो. उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन क्लासेस. So it's been 5 years I started my individual classes in Nritya Yoga Sutra. And at that time I found that जितना मैं apart from my corporate job, मतलब 10 hours 9 hours के जॉब के बाद या फिर जॉब के पहले जो मैं मेरे नृत्य योग सूत्र या फिर डांस की क्लासेस ले रही हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दैट इज गिविंग मी मोर हैप्पीनेस देन व्हाट माय जॉब वाज गिविंग मी. सो ये सारी बातें विद टाइम माय फैमिली ऑल्सो रियलाइज्ड कि शी इज मोर हैप्पी विद वट एवर little bit she is earning from dance, but she is more happy. At least, see, I can proudly say here that at end of the day, I'm more satisfied when I teach people dance or teach people Nritya Yoga Sutra dance therapy, because uh, at that time I feel that I'm giving justice to myself. Okay, so this is what I found, and this played a major role where my life changed in last 1 year. Then I took a decision that I'll switch my profession as a dancer. It was a very big thing and a challenging thing for me to convince my parents to switch my career from engineering to dance. It was also not easy at that time कि घर पे कन्विंस करना सबको कि कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ना है, डांस क्लासेस मुझे स्टार्ट करना है. But then with time, they also realized कि ठीक है, चलो, you give a try. So basically what I want to tell you is, it was never that easy. But as I was passionate for this art form, I always remained close to it, और मतलब मैंने उसको पकड़ के रखा डांस फॉर्म को. एंड दैट इज वाई जो आज मेरे हाथ में है या फिर people have started recognizing me, you have called me today on this show, is all because of my dance. अगर 9 to 5 का जॉब करती तो आई डोंट थिंक सो मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता. ऐसा भी नहीं है, बट यू नो आपकी बातें सुन के मुझे एक बात रियलाइज हुई कि सी आई वोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, लेकिन हम लोग का एक जनरल सोसाइटी का एक मेंटालिटी है कि हम लोग अक्सर बच्चों को नहीं करने देते कि जो उनको चाहिए. पहली बात तो आधी से ज्यादा पब्लिक को यही नहीं पता था कि हमारे बच्चों को खुद भी नहीं पता होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं करना पता क्या होता है है कि उनको क्या पसंद है. लाइक आई ऑलवेज मेंशन दिस, माय डॉटर लव्स ड्राइंग.
तो मैं उसको कभी भी उसमें पॉज नहीं डालती हूँ, मैं उसको हमेशा इनकरेज करती हूँ, यू लाइक इट, फुल डे शी इज विद कलर्स, एंड इट्स नॉट दैट शी इज नॉट गुड इन स्टडीज, शी इज टॉपर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई पैशन हो तो साथ में अगर आप पढ़ाई के करते तो शायद आप वो जॉब भी नहीं छोड़ते। Right. मुझे ऐसा लगता है Right. बिकॉज I mean my life experience, and I think that Three Idiots movie is perfect. Yeah, Right. it's you know, we wouldn't blame any of the parents here, but yeah, parents have to be into the consideration of what the child likes, because जैसे आज का दौर चल रहा है, हमारे टाइम पे 60% तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आज तो 99% में 100% में भी ये लोग दुखी। आई मीन व्हाट आर वी आस्किंग देम टू डू? आर वी Yes. नॉट गिविंग देम अ स्ट्रेसफुल लाइफ? एंड ओके, academics is important, the degree is important, but if the child is just studying and the child is not happy, how does it help? और मुझे ऐसा अभी भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, शायद अगर आपने डांस के साथ जॉब एंड पढ़ाई की होती तो शायद आप कुछ और भी होते। I tried doing that, but I mean, what I felt at that time also कि this is not working. This is not what I want. मुझे अगर ये करना ही नहीं है तो why I'm wasting my time in doing the job? I don't know what I'm going to do in coming future. I mean, I might also think because my parents are always behind me कि you should try for next few years and then later on you can जब सब stability तुम्हारे life में आ जाएगी you can stay into this profession. But then I don't know why even today also people are not accepting this as your uh, first profession. Why they are not accepting this as your first priority? Or you can even do something with your passion. I know, I mean, money matters, but then satisfaction is also more important. This is what I feel. You should be able to give justice to your own self rather than giving justice to others who are there around. So, Because if you are not happy within, you cannot spread happiness outside. right. And there's always a saying, first love yourself only, then you can love others. First, you have to be contented about what you are doing. Like for me, I've sacrificed a lot, but at the end of the day, I know okay, I've lived that part of life, and today what am I doing is आज का importance है, ठीक है? So we have to go with the flow. But yeah, in fact, I was also working, so I had to sacrifice my job and lots of things. But even I realized कि मैंने इतना कुछ सीख लिया, like even I learned NYS. You remember? I was in Africa, and it was very, I mean, I don't know, NYS का जो म्यूजिक है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मुझे किसी ने लिंक पास किया था, आई नो, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना, आई डोंट नो, वो एक पता नहीं कुछ अलग ही है। It takes you to That the spiritual, that yes. Indian culture, that internal peace. I mean, every time I just And used to listen to yes, and people who I are, miss that. I will mention one thing over here, Chandaji, that people who are already into spirituality gets attracted towards this thing more quickly. This is what we have This is very realized so many soothing. years, yeah, and meditative also. Yes. So then it becomes difficult for we people to keep ourselves away from this kind of art. I agree because I've been through this. Like even for some reason, I'm not able to practice advice, but that guilt kills me. There are some days when I blast on them, on my husband and my daughter, because of you guys, I can't do it. But of course, उनका गलती नहीं, वो मुझे खुद से करना पड़ेगा. When I initially learned, that when my daughter was there, and she was not born, so I specially came from Muscat to India Yeah, for 10 days and exactly 11 days का trip था. और 10 दिन डेडिकेटेडली मैं, मतलब आई आज पहुंची और कल से लेके मैं नासिक में गई, एंड आई यूज्ड टू ड्राइव। आई मीन सोचो, मैं बाहर रहती हूँ, एकदम से गाड़ी नहीं चला रही हूँ, सडनली आपको इंडिया में आके डिफरेंस हो जाता है, राइट? yes. लड़ाई का। आई वाज सो पैशनेट। मैम से सीखने के बाद मैं घर जाती थी, बिकॉज मैम इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर टीचिंग, एंड आई यूज्ड टू लव इट बिकॉज आई न्यू दैट इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड शी वाज आल्सो लाइक आप अच्छे से सीख के जाओ ताकि आपको इजी हो। तो मैं घर जाके जैसे ही घर पहुंचती थी, सिर्फ खाना खाती थी और मैं ऊपर रूम में ही रहती, मैं मम्मी से सिर्फ रात
to practice as To practice. Whole day I used to practice because I knew that when I go back, I wouldn't be like, I have to clear my doubts doubts and everything. Yeah. So that was so much love for it. I mean, मैं कभी थकती नहीं थी, कभी मैं बोर नहीं होती थी. इनिशियली वो कुछ स्टेप्स है ना जिसमें स्ट्रेचेस में पैर वेर दुखते हैं, लेकिन आई नेवर गिव अप. So I totally agree with you. This is something which is so pure. I have no words actually. It takes you in a very different world. And you just now mentioned ki you don't get tired when you do things which you love. Yes. This is what I experienced that when I was doing job, समझ लो अभी मेरा जॉब हो गया, आई हैव लॉक्ड आउट एंड आई यूज्ड टू से कि मम्मा आई एम टू टायर्ड नाउ प्लीज मुझे कुछ भी मत काम देना, आई एम जस्ट गोइंग टू बेड नाउ. तो ये हो गया. But then when I practice dance for the whole day, when I practice advance whole day, when I'm engaged into these activities for 7 to 8 hours, these things don't come out of my. I never say this thing, ki, Mama, I'm tired. I don't want to do anything now. This is the main difference which I've experienced myself, where in between both the things. And जब मैंने job switch किया, that time also my parents were like, you experience, you choose yourselves. Now we are not going to force you कि नहीं तुम्हें job ही करना है, यही करना है. They were like, you experience. You want to take a break, you take a break. Experience कि कितना तुम्हें, because being an artist is not an easy thing. अगर classes भी conduct करने हैं, as a dance teacher भी you have to stand out in the society. It is not that easy, है ना? So you experience that also now, because anyways I'm having corporate का experience, so that is going to be useful to me in my future also. So now I'm having two things in my hand कि ये भी choose करना है तो this also I have, and अगर as a dance भी continue करना है as a dancer, as a profession. तो yeah, but जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएगी, I mean decisions will keep on changing. One thing which will not change is my passion for dance and how dedicatedly we are into the dance. Because always this, I mean, बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आज तक मैंने जितना भी डांस सीखा है, तो दो बार ऐसे स्टेजेस आए मेरे लाइफ में व्हेन आई हैड टू टेक अ ब्रेक. So it wasn't that easy to resume with my dance practice again. बिकॉज डांस में कंसिस्टेंसी या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म में कंसिस्टेंसी डेडिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड व्हेन आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट डांस फॉर्म, तो स्टैमिना इज मोर इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 3 4 years एंड देन यू एक्सपेक्टिंग कि मैं आगे मतलब जाऊँ और डायरेक्टली आई कैन परफॉर्म फॉर 15 minutes, हाफ एन आवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दो मतलब when I resumed with my practice, 2 3 साल I practiced, and later on me with I mean of course with Didi's permission, we started practicing for Rangamancha Pravesh, my Odissi ka Rangamancha Pravesh, which recently happened. That time also, the day we started Mancha Pravesh ka practice, I got a ligament stretch in my leg. So I was so depressed at that time that I don't know why. I mean, these challenges I have always faced while learning my dance. So I was, I mean, very mentally disturbed the last 1 year. I started something, I mean, कुछ अच्छे के लिए मैं करने जा रही थी. I was doing something good. मंच प्रवेश का प्रैक्टिस करने जा रही थी. And I don't know मम्मा ये क्यों हुआ. And ऐसा भी नहीं है कि I was doing jumps, I was doing some stretchings, and I was doing some rigorous practice and उसकी वजह से stretch हुआ. Nothing. कुछ नहीं. All of a sudden my leg started paining, and जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, he was like your ligament has got a stretch. And now for next 7 to 8 months you cannot dance. And practice तो start कर दिया मैंने मंच प्रवेश का, declare कर दिया सबको कि next November December तक मेरा मंच प्रवेश है. So I was so disturbed at that time कि क्यों मतलब why I'm facing these challenges. At that time, Didi, my guru, she mentioned one thing, that this is where your God is going to test you now. How much passionate you're about your dance. You always keep on saying that I love dancing, dance is my passion, I can do anything for dance. This is where you're going to be tested now.
And but still, I mean, at that time, I wasn't convinced with this thing also. I'll tell you, Chandaji, I mentioned this thing to her also that Didi, I want to take a break. I cannot take it now because it was very difficult phase for me. कि क्यों हुआ ऐसे? I was not able to accept the fact कि मुझे डांस नहीं करना है. Now I've taken a break from my job. सब academics खत्म हो गया. I've become an engineer finally. And जब मेरे पास टाइम है तो ये सब हुआ. So I said कि दीदी, I'll take a break. I don't want to do anything now. I want a break. So she was like, see Kiran, this is your decision. If you want to take a break, you take. But then again, I remind you this thing that be prepared for what life is throwing at you. Okay, this is your, I mean, life is testing you now. So you don't backstep. This is what I'll tell you. बाकी तो decision तुम्हारा है. So I just used to go to dance class and sit and watch other students dancing. तो और वो ज़्यादा मुझे hurt होता था कि I'm not able to dance. But then still I used to go every day. I mean twice in a week for dance classes. I did not bunk the class. Every day I used to go to the dance classes. And करते करते जब I thought कि my leg is not paining and I'm recovering. Recovery phase जब मेरा start हुआ. So I said कि दीदी, we can give a try and we can start further practice now. That time also I wasn't that sure कि कैसे होगा क्या होगा पता नहीं. But देखते practice start कर देते. And you will not believe चंदा जी, जिस दिन से ये हमारी बातें हुई, मंच प्रवेश का डेट फाइनलाइज हुआ, ऑटोमेटिकली मैजिक हैपेंड. उस दिन से मेरा लिगामेंट पेन हुआ ही नहीं. I mean, this was magic which I experienced in last few months. कि उस दिन से उसके पहले तो भी मेरा I used to experience थोड़ा बहुत पेन या फिर if I used to stretch, dance तो थोड़ा पेन होता था मुझे. But then since last few months जब से मैंने मंच प्रवेश का प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो automatically things started resolving. हुआ ही नहीं उसके बाद पेन. So what I want to convey through this is your willpower should be strong and you should be that was really when God was testing my patience and love for my art form. This is what I'm feeling right now. So this is how it is. I mean, when you are into any art form, you have to be dedicated and regular into that. आई अग्री बिकॉज अभी देखो मैंने आपको बताया जैसे मेरा गैप हो गया अभी वो गैप है ना एक बहाना बनते जा रहा है पोस्टपोन मैं आपको कितने समय से कह रही हूँ मुझे वो एग्जाम देना है 1 साल हो गया 2 साल हो गया आज आप आ रहे थे तो मुझे अगर 3 साल हो गए तो यही होता है जब हमारे लाइफ में फिर आप कितने भी पैशनेट हो अगर वो पॉज लग गई तो बहुत मुश्किल है Very difficult to सेम receive. थिंग आई बीन लाइक कुछ ना कुछ करते रही हूँ या वॉक या योगा या मतलब कुछ ना कुछ मुझे फिजिकल एक्टिविटी चाहिए बीच में क्या हो रहा था कि lots of reasons because of my daughter's schooling and all. I was not able to take care, and it was affecting my health so badly because of my diabetes and all. I have to be, I have to do some kind of workout every day because मेरा खाना पीना तो बहुत strict है. But just eating this and that and medicines actually don't really help you unless see exercise in any form, whether it be dance or yoga or whatever. It gives you, it's your me time. अगर Yes. आपको वो मी टाइम किसी भी चीज में डांस करो रीडिंग करो कुछ भी करो एज लॉन्ग एज यू फील हैप्पी तो मैं वो योगा कर नहीं पा रही थी तो मैंने कहा अभी इसके लिए एक कुछ ऑप्शन ये है कि मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली एंड ये क्लासेस होते थे ऑनलाइन तभी भी मैं नहीं कर पाती थी लेकिन मैंने ठान लिया था आई एम वेरी डेडिकेटेड टू थिंग्स मैंने आई डिसाइडेड मीन्स कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी का स्कूल छोड़कर आती थी मैं सारा मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह देकर मैं रूम में अपने आप को लॉक करती थी 1.5 घंटे तक कुछ नहीं ऑनलाइन का पूरा जितना रिचुअल है पूरा क्लास करके फिर मैं अपने रूटीन में जाती थी एंड आई डिड दिस एवरी डे विदाउट मिसिंग इट वाज 21 days नाउ अगेन आई एम बैक टू माय रूटीन सो यू हैव टू बी पैशनेट यू कैन नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस Right. अगर वो ब्रेक लग गई जैसे आपके साथ हो देखो कहीं ना कहीं पता है हमको अंदर से एक फीलिंग देती है somewhere you start I don't know
I won't say hate, but then you feel low about yourself, you lose your confidence, and you Yes. feel like life is becoming a burden. And by डिफॉल्ट ऐसा होता है कि आसपास के कुछ भी आपको लोग वो चाहे प्यार से भी बोलेंगे आपको वो है ना चिड़चिड़ मची। Yes. तो ये एक पता नहीं वो शायद नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाता है अननोइंगली हमारे थ्रू, बिकॉज हम लोग को कोई चीज जो पसंद थी वो करने नहीं मिली। नहीं। तो इसके लिए अपना पहले तो काफी सारे लोगों को दुनिया में ये नहीं पता है कि उनका पैशन क्या है, और जितनों को पता होता है कि पैशन क्या है वो वहां पहुंच नहीं पाते। ये बहुत सीरियसनेस है, सो आई ऑलवेज कीप आस्किंग। This is matter of discipline. या May it be anything then, may it be a drawing, यस dance, whatever it is, music. अगर discipline है उस art form के लिए, only then you'll be able to achieve what you want. It is not that easy. कोई भी dance, कोई भी art form. डिसिप्लिन जस्ट ये आर्ट के लिए नहीं है, आई डू अग्री आर्ट के लिए या कोई भी चीज के लिए। मुझे लगता है लाइफ में भी आपको बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। पता है हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं वी डोंट हैव टाइम। आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? अब Yes. मैं 4 o'clock उठती हूँ, ठीक है, मैं रात को 11-12 बजे कैसे भी सो जाती हूँ, लेकिन मेरा जो रूटीन है मैं वो It नहीं starts at बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई वेक अप लेट, ऑब्वियसली मेरा सारा रूटीन बैकलॉग में जाएगा, distinct. फिर मैं चिड़चिड़ करूंगी, सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे घर वालों को करती। इससे अच्छा आप अपने आप को बैलेंस करो, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। Hmm. तो ये तो डिसिप्लिन मुझे खुद से लाना पड़ेगा। आई Yes. कैन नॉट एक्सपेक्ट माई डॉटर टू डू योगा, विच इज Right. वेरी it's not a good idea to think about. So, and you have to do it yourself. You have to create an example. अब जैसे मैं मिलेट जर्नी का, you won't believe me, people do so much of time pass with me. They'll call me, they'll ask me, and they're in serious chronic diseases, even cancer. But for them, कौन खाएगा मिलेट्स, कौन पकाएगा, भिगाएगा कौन? मैंने कहा अभी भिगाने के लिए तो आपको कोई भगवान वरदान कुछ नहीं करेगा, आप इतना नहीं कर वो सकते। तो तो मुझे पता है, I get so irritated. भिगाना is big deal. 2 minutes. I mean, you're taking toll over your health. मैंने तो मैं बोलती हूँ मेरे को भगवान ने टास्क दिया है, मैं आप लोग को समझाऊंगी 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आपको करना है नहीं करना that है, is योर your चॉइस। job. Yeah. बट माई पैशन टूवर्ड्स व्हाट गॉड इज, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे ये काम दिया है कि आप समाज में लोगों को हेल्थ के बारे में बताओ, तो मैं बताती हूँ। करना नहीं करना मैंने Kind स्टफ of a कर दिया। social service you can Yes, call it. yes, yes. Because see, with discipline comes good health. Yes. With good health comes love for yourself and your family. Automatically, you create an example. आपका फैमिली में हैप्पी एटमॉस्फेयर है, आप समाज के लिए भी हैप्पीनेस ही क्रिएट करें। इट स्टार्ट्स विद द फैमिली Yes. एंड फर्स्ट योरसेल्फ। First yourself. This फर्स्ट is most योरसेल्फ important. मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले अपने पैशन को जानिए, उसमें डिसिप्लिन रखिए। और अब जैसे इन्होंने जॉब के साथ भी किया, कोशिश की, ऐसे नहीं आप चाहते तो आप गिव अप कर दो, नहीं मुझे नहीं करना, फिर घर का माहौल और बिगड़ जाता Yes. है, लेकिन आपने सब किया, As पढ़ाई because, भी की। as because I wanted to experience both the things. I know. So this is very important and really this is very motivating and very inspirational. I think every person should watch this show, not because it's my show or just because Kiran ji is saying, but because अगर आप मैसेज ध्यान से सुने, One more बहुत deep thing I would message। like to mention over here is जब मेरा when I was जो मेरा मेडिकल इश्यूज की वजह से when I was not doing dance, जब डांस के लिए भी एक ब्रेक लग गया था फिर से, तब जॉब भी मेरे हाथ में नहीं था। दैट टाइम आई रियलाइज कि आज अगर मैं जॉब के साथ डांस भी कर रही होती तो आई वुड हैव, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे हाथ में डांस क्लासेस नहीं थी या फिर नृत्य योग सूत्र की क्लासेस भी नहीं थी। आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग। तो व्हेन आई हैड, आई मीन, मेरा शेड्यूल ऐसे था कि starting at 6 a.m. in the morning until 10 o'clock at night, I used to do some of the other activities. I used to keep myself busy with these kind of activities. दिन में मेरा job रहता था. Before job also I used to conduct some batches. After the job also few batches I used to conduct. तो तब मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि मैंने जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। आज मेरे हाथ में जॉब होता तो आज मैं जब डांस क्लास नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट आई वुड हैव अर्नड समथिंग आउट ऑफ दैट। That time I realized. But then again, this was, I mean,
new challenge in front of me कि डांस भी नहीं है अभी, जॉब भी नहीं है मेरे पास, तो दैट टाइम आई स्टार्टेड माय मैकरम का बिजनेस yes, I saw that. बिकॉज हाँ, तो कोविड में ऑनलाइन मैंने ऐसे ही सीख लिया था मैकरम, एंड उसको भी मैंने एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से कभी देखा नहीं। तो दैट टाइम बैठे बैठे क्या करना है अभी, एंड मैं ऐसे तो बैठ नहीं पा रही थी, डूइंग नथिंग एंड जस्ट सिटिंग, तो वो हो ही नहीं रहा था मुझे। दैट टाइम आई स्टार्टेड माय दिस स्मॉल बिजनेस आल्सो मैकरम का। सो एज दिस वाज विथ मी कि जब आर्ट फॉर्म हमारे पास होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म, सो हियर आई वाज नॉट इनटू द डांस आल्सो, नॉट डूइंग माय इंजीनियरिंग का जॉब आल्सो, बट समथिंग एल्स आई वाज डूइंग फ्रॉम वेयर आई वाज एटलीस्ट एबल टू अर्न समथिंग which was again giving me happiness कि चलो मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ घर पे, I'm doing something, I'm selling my products on Instagram, and now that business is also going Good. yes. I saw the products and they're very beautiful and something made with hand. उसमें एक अलग ही I don't know. I have no words actually. वो अलग ही Elegance, beauty होती है। elegance. हाँ, That हाथ से बनी elegance. हुई चीज का कुछ अलग ही Yeah, ये दिखता है। So how do you uh, I would like to know about your journey about this show जिसमें आपने नासिक में परफॉर्म किया था। oh. ये कैसा So, रहा एक्सपीरियंस आपके लिए? एक्सपीरियंस तो बहुत ही, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन आई स्टार्टेड विद दैट, तभी भी मेरे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, बट देन एज आई kept myself into the dance practice dedicatedly, passionately, वो कर पाई मैं। एंड ओडिसी का फर्स्ट मंच प्रवेश हुआ ये नासिक में, तो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट एंड समथिंग न्यू थिंग which we experienced, we people experienced being an Odissi dancer, and yeah, we are fortunate कि हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट्स है एकेडमी के जो ये कर पाए। नासिक में भी फर्स्ट ओडिसी का रंगमंच प्रवेश हुआ और एकेडमी से भी, तो या इट वाज वेरी गुड। It was good. So you got nice break from everything after Everything. all the Yes. struggles, right? And I'm sure it would be very beautiful to just perform on the stage for something which you love. Yes. So now you did the NYS, then you did this Odyssey, and Odyssey. then उसके Macron. Macron भी अभी आगे क्या plan है? I'm also a tarot reader. Wow. So how does So, tarot help you? Tarot, I haven't tried on myself, but I think so. I've been able to help a lot many people around me. So yeah, that is also some kind of different experience for me. I love doing. I mean, I don't believe in just sitting and doing one thing at a time. I always want to do multiple things. अगर मैंने ये चीज़ देखा तो मुझे ये भी करना है, ये देखा तो मुझे ये भी करना है, and I do. I mean, ऐसे नहीं है कि I'm praising myself over here, but all the things I try to do with 100% perfection. अगर लिया है मैंने कुछ टास्क हाथ में तो आई कंप्लीट दैट, उसको बीच में ही नहीं छोड़ देती मैं, एंड दिस हैज हेल्प मी अ लॉट। दिस डिसिप्लिन व्हिच आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माय लाइफ हैज हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि इफ यू आस्क मी अबाउट टैरो, टैरो भी मैंने कोविड में सीखा था। जब कुछ था नहीं, सब ऑनलाइन स्विच हो गया ऑल ऑफ अ सडन, तो ऑनलाइन ऐसे ही मैंने टैरो का एक क्लास कर लिया था विच इज हेल्पिंग मी नाउ। अगेन मैक्रम का भी सेम थिंग हैपेंड कोविड में ही, आई लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, एंड या दिस इज हाउ इट इज। तो अगर हमारे पास कुछ आर्ट फॉर्म है, कुछ अपार्ट फ्रॉम योर कोर थिंग, तो मल्टीपल हमारे हाथ में चीजें होती है। अगर जॉब नहीं है तो हमारे पास, यू कैन टेक डांस क्लासेस, यू कैन डू मैक्रम का थिंग, यू कैन डू टैरो थिंग। दिस इज व्हाट आई बिलीव इज व्हाट आर्ट फॉर्म इज। So this is why I tell people that when you come to Infinite Inspiration, it is not just about your career. It's not just about being yourself. Everybody is going through a journey. बहुत सारे अप्स एंड डाउन, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास नहीं होता, लेकिन वो कैसे फेस करते हैं ये ब्यूटीफुल एंड हाउ जो यू हैव टू, जो आपने बोला कि यू योरसेल्व्स हैव टू मैनेज कि तुम्हें सारी चीजें कैसी करनी, दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग कि व्हेन even if you're doing multiple things, this is a big task कि how you are managing all these things now,
Because even in my friend circle, people keep on asking me, "Ki, Kiran, you're doing multiple things. How you do this?" Then I tell them कि weekends को I only keep for tarot sessions. Weekdays में 3 days for my dance because मेरे ही dance academy में as a trainer भी हूँ मैं उड़ीसा की. So there I work for 3 days in a week. Rest of the 3 days I do my macram ka thing. So this is how I have designed my schedule now. Because I cannot stop. I cannot give a break to macram now. I cannot give a break to tarot now. Because once you start posting this, once you start telling people, कि I know this thing, I'm into this thing, you cannot avoid those enquiries when it starts coming to you. You cannot say कि नहीं आज से मैंने शटर बंद कर दिया है, मैं मैग्रम का नहीं करती, I don't do tarot reading now. So this is how I am doing it right now. It needs dedication. And this also develops your personality, you know. One thing I would like to mention over here, जब मैं मेरे जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, so my HR asked me about my passion. So that time I said कि I'm very passionate about classical dance. I'm learning Odissi. So she said, I was quite sure you will say this thing because you, Kiran, you are carrying that aura with you, that you are a classical dancer. You, without telling that you are a classical dancer, I got to know that you are a dancer. So that time I was like very proud. I felt very proud of myself. Ki, yes, this is how dance has developed my personality. So आप जैसे जो चीज में पैशनेट होते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली गॉड वो यूनिवर्स आपको ऑरा में डाल के देता है yes, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट फॉर मी इन माय ड्रीम्स also I think about millets, I think about yes. cooking new So recipes. automatically, even without verbally, you telling people, समझ जाता है लोगों को. Are you into a fitness background? Are you a dancer? Yeah, because when they see me, how do you maintain? I said, because I work hard on myself. मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती. I have a very disciplined life. Of course, we have cheat days. I know what to eat. अगर आज कुछ खा लिया, हम भी चीटिंग करते हैं, लेकिन फिर उसका भरपाई करनी है. यहाँ तो आप वर्कआउट करो, यहाँ तो उस दिन कुछ मील्स करो. आप सब कुछ हॉक करके एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मेंटेन हो, इम्पॉसिबल. सो दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. नहीं, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे. I keep on going. I mean, I go through your WhatsApp ka status and millets ka recipes also. So I was very impressed by one recipe ki millets ka ice cream. Last week only I saw your WhatsApp. So अगर now I keep on mentioning to my NY students, Nritya Yoga Sutra students, that if you they say कि नहीं मैम आइसक्रीम खाने का तो मन करता है इतनी धूप में, तो at that time I will mention कि अगर खाना है तो you have this option ना, you can have millets का आइसक्रीम. जिसको करना है तो वो इस तरह से भी कर सकता है. एंड अगर एक्सक्यूजेस ही देने तो देन नो वन कैन हेल्प यू. हम लोग सब कुछ खाते हैं. हम लोग केक भी मिलेट का खाते हैं. Yes, that was quite impressive. I was going to message you कि चंदा जी, I want this. Yesterday I made laddus of ragi का पोहा. Wow. मतलब मैं ना कुछ करते रहती हूँ because see my daughter, she is small, she also feels like eating this, that so she come, मम्मा can I eat लड्डू, तो मैं can I eat तो बोल दिया, लेकिन वो खाना कैसे? You are also able to invent this new recipes is because of your daughter. Yeah, And this is what I feel. Credit goes to yeah. your daughter because you can't say no to her. No, you'll not be able to eat ice creams. You'll not be able to eat cakes. So you Definitely. keep on trying. She is my biggest inspiration, and she is the reason for whatever I am today. Because till the time I've always mentioned on मेरा एक video भी especially with why am I starting this show. My daughter is my biggest inspiration. Till the time I was diabetic, सच बोलती हूँ मुझे कुछ पता नहीं था. मतलब इंसुलिन लेना है, खाना खाना है, कब लो हो रहा है. Later you कुछ भी started खा hunting. लेती थी, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है. लेकिन जब मेरी डॉक्टर को डायग्नोज हुआ, बिकॉज शी वाज स्टिल ऑन मिल्क, और उसको मिल्क भी अलाउड नहीं था. अब बच्चा अगर मिल्क भी नहीं पिएगा तो कैसे चलेगा? सो इट वाज लाइक द टफेस्ट फेज ऑफ Then your journey started. yeah. So because of that also I was for some reasons advised में मैंने सीखा दोबारा से. लेकिन यू नो दैट मदर बैकग्राउंड चावल जाता था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करो, ऐसा नहीं है. शी इज वेरी सपोर्टिव, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. लेकिन क्या होता है ना, इतना कुछ होता है उसकी हेल्थ के साथ कि मैं थक जाती हूँ. क्योंकि ये डांस नहीं कैसे ना, उसमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, आराम से बैठो. एंड शी इज टू स्मॉल एंड शी इज पपेट है, हर जगह पर मुझे चिपकी रहती है. तो उसके डायग्नोसिस के बाद मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया. वो दूध भी पीती थी, फिर मैंने आलमंड मिल्क बनाना सीखा, सोया मिल्क बनाना सीखा.
अगर रोटी खानी है तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। तो मुझे पता है काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओवरडू थिंग्स, ऐसे प्लीज़ डू नॉट जज एंड कमेंट। आपको पता नहीं है It कि is इतना छोटे से बच्चे के साथ वो जर्नी कितनी डिफिकल्ट है। difficult. एंड शी इज कम विद टू मी आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, हर जगह मन्नतें मांगी है। तो द जर्नी हैज बीन वेरी, आई वुड से डिफिकल्ट, बट देन या शायद भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया एंड शी इज डेफिनेटली माई इंस्पिरेशन। मैं उसको देखती हूँ ना, मैं कितना भी लोग, एंड शी इज वेरी लविंग एंड केयरिंग। आप उसके लिए, जैसे मैंने आइसक्रीम में, मम्मा कैन आई ईट आइसक्रीम, ऐसा ड्रामा करके हर चीज पूछती है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको ना नहीं बोलना है। तो हम हर चीज खाते हैं। सो देखिए अभी कहाँ से बात कहाँ पहुंच जाती है, मेरा पैशन आई ऑलवेज लव। सो गॉड इज प्रिपेयर्ड यू ऑटोमेटिक, Yes. सिर्फ हमको हमारे क्वालिटीज पता नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा हर शो में लोगों से कहती हूँ, आप अपने आप के साथ बैठिए, आप अपने आप को जानिए। You know, I've also learned all this because of my healing classes. I was joined, I'm still in connection with Home Stories, where we have a guru, we call her mom. Because of her, also, my life has changed. I could not sleep for 5 years. 5 years, can you imagine a person not sleeping? You remember your classes used to be in the morning hours, Morning seven. and Africa में कभी 3:30-4 बजे मुझे ज्वाइन करना पड़ता था. So obviously person will wake up and Yes. freshen up. और मुझे सब पता होता था कि अभी 3 घंटे बिजी रहूंगी, तो मुझे इनका ब्रेकफास्ट का, मील का सब प्रिपरेशन की पहले से ही प्लान करना पड़ता था कि क्या होगा. So it was very difficult, but then I did not give up. I did not miss one class also. Even I used to travel, I used to do it from the hotels. But unfortunately, I couldn't give the exam. I mean, see, it was for my passion. I learned it. That is why you don't regret not giving exams in that. मेरे को एक्चुअली ऐसे भी लोग बोलते हैं आप सिखाओ, मैं कहा सिखाऊंगी, लेट दैट हैव सम टाइम, लेट हर ग्रो बिट. बट या मेरा एक्चुअली अगेन मेन आइडिया वापस से सीखने का मेरी बेटी से ही, बिकॉज मुझे लगता एंड शी वांट्स टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम मी. तो मैंने कहा आगे चल के इसको मैं ये सिखाऊंगी तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी. एंड आप घर पे उसको कुछ भी करवा दो, शी इज लाइक हैप्पी, बट दैट टू जॉइन द क्लासेस शी इज लाइक नो मम्मा, शी मेक ऑल द ड्रामास. तो शायद उसकी वजह से सीखते 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 मैं इतना कुछ सीख गई. सो आई डेफिनेटली टीचर एडवाइस, एंड मुझे बहुत मन है कि मैं उसको क्लासिकल डांस ये सब भी सिखाऊं. और आपके क्लासेस के बारे में बताइए, आप क्या क्या सिखाते हैं? Odissi, तो yes, I've started my conducting Odissi ka individual So this classes is online or online, offline, both. okay? Yes, and I'm also a trainer in my own academy, Kiran Khade. There, so since last 3-4 years, I've been teaching Odissi, and since last 5 years, I'm teaching Nritya Yoga Sutra dance therapy. It also has a special course designed for kids, right? Yes. So you've done the kids wala also, bada wala bhi also. Yes, when you do certificate course, so in that everything is included. You get to learn all the things, and later on there are different modules in that for kids, for general fitness, weight management, specific diseasing. So this you all get to learn when you enroll for internship in Nritya Yoga Sutra. So then later on, I've always been in touch with my guru. I've got to learn many things from my guru. So it is all because of her blessings. So calm. I mean, she never loses her temperament. I always used to wonder how is she so calm and so soft spoken. मैंने उनका कभी ऊंचा आवाज ही नहीं सुना. Very soft, and when she is an example, like she also carries the the tradition, the culture of the music background, the dance background. मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ ये भी क्लासिक, जैसे आपको किसी ने कहा, मैम को देख के भी लगता है. So, do you, I mean, take classes for kids also? Yes. So now anybody who wants to learn Nritya Yoga Sutra, Odissi dance, और भी बहुत कुछ टैरो वगैरह करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा. So do not miss it, right? This is a very big opportunity, and this is something which is really beautiful. तो मुझे भी खुद देखिए हर बार मेरे को एक्चुअली ये शो है सबके लिए, लेकिन मैं खुद इंस्पायर हो जाती हूँ. So now, where do you take this dance journey forward? क्या कुछ सोचा है? No, I really don't know what I am going to do
in coming future, because this is going to be a lifelong learning thing for me, because ऐसा नहीं है कि मेरा मंच प्रवेश हुआ या फिर I've been learning since last more than 15 years, तो मैं सब सीख गई हूँ, मुझे उड़ीसी आता है, तो you always yeah, we have to keep learning. So yes, of course I'll keep on learning Odissi. Let us see where this takes me now. अभी तक की तो ये जर्नी थी मेरी. So how do you think, how does dance help people, like other than the working? अभी प्रोफेशन के अलावा क्या करता है डांस, कैसे हेल्प करता है? Dance तो for physical fitness. This is the most beautiful compliment I received from everyone. कि Kiran, you're so fit, and they themselves say कि I know this is all because of your dance, because everyone knows now कि since childhood I'm into dance classes or dance practice. So yes, for me it is for physical fitness, and apart from that I feel spiritually connected when I dance. So yes, this is what it is. So do you get connected to Shiv Bhagwan? Because he also used to do the नृत्य when he was in an angry mood and all that. ऐसा कुछ होता है? नहीं, वैसे नहीं होता, but I feel more soothing, calm when I dance. I mean that this thing I've experienced, that अगर if I'm too much frustrated, और या फिर कुछ चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, एंड इफ यू डांस एट दैट टाइम, दैट गिव्स मी मेडिटेटिव इफेक्ट. So this is what dance is So for me. if you're not happy or you're sad about something or कुछ आपको irritate कर रहा है, Yes. तब dance करते हाँ, अगर मैं डांस क्लास के ये लिए तो चली बात जाऊँ, अच्छी डांस प्रैक्टिस कर लूँ, तो आई फील हैप्पी कि चलो एवरीथिंग इज So- गोइंग टू fall in place now. Let me do my dance practice. because you love it. Yes. Anything that you love is automatically going to give you soothing. Right? Yes. And yeah, don't you think it keeps you connected to Mother Earth also and the nature? Yes, of course. Because I feel, because the steps आप वो tapping करते हो Right. and उसमें कृष्णा जी का भी एक मुद्रा प्रैक्टिस थी जो मुझे बहुत पसंद है because I love कृष्णा. तो I don't know, हर एक step जो था बहुत beautifully designed है. So Enva is something which everybody must learn. और अब तो ओडिसी के बारे में मुझे इतना पता नहीं, लेकिन किरण जी आप उनसे बात कीजिए, बहुत सारे अब आपका मैसेज क्या है हमारे जनरेशन के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, एंड एट द सेम टाइम फॉर द पेरेंट्स so that they can also help their kids. Of course, career is important, education is Yes. important, but at the same time, we should not get them off what This they like. is because of my degree only, which has helped me a lot to implement things in my life, in my dance journey. Because um, see, I mean, when you're educated and being knowledgeable, these are two different things, है ना? तो अगर हमारे पास वो knowledge है, skills है, तो only then you will be able to implement those things in your life. जैसे हमने अभी discipline के भी बारे में बात की. It is only because you have implemented already so many values in your life. So it all comes from education only, है ना? So of course that is important, but along with your academics, you please, I will say that you don't, separate yourselves from your passion, and don't call your passion as your hobby. These two are different things, what I feel. Because hobby is just the thing which you do for the sake of happiness and you keep that aside. Passion is what you carry with keep yourselves whole life. whole life. That you cannot stop. कि चलो हो गया मेरा सीख के, and still you say कि this is your It's a passion. never ending That is never ending process. So and पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, वो भी गलत नहीं है, एंड जो मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि they at their place they are right, but अगर if we are choosing our passion as a profession, so you have to keep yourselves dedicated. अगर डांस करना है, क्योंकि डांस करना है, जो हमारी थोड़ी देर पहली बात हुई, डांस करना है, बट इट इज नॉट दैट इजी. यू हैव टू कंडक्ट बैचेस, नेशनल बैचेस, इंटरनेशनल बैचेस के तो अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेने पड़ती है, लेट नाइट क्लासेस लेने पड़ते हैं, विच इज नॉट देयर इन 9 to 5 का जॉब. अगर जॉब कर रहे हो तो
8-9 घंटे जॉब करके we finish our work. Then तो you have time for yourselves, which we don't get when you're working. I mean, in your own profession. I mean, as a dancer when I'm working now. So I am तो 24 घंटे क्या 25 hours I'm busy. So you have to ready for this thing if you're entering into passion. So, see, that's very beautiful message. In short, follow your passion, but at the same time, education is important. Education के बिना भी life impossible है, because पढ़ना जरूरी है. पढ़ने के साथ ही हमारा, you know what is right and what is wrong. I totally agree, because degree is also very important. Yes. आपके पास आपका पैशन है और डिग्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लैक करो. Yes. और True. आपके पास जब डिग्री है विथ योर पैशन, यू गेट abundance of confidence. तभी आपको The way you talk, the way you stand, the way you carry yourselves is all because of your education. This is what I feel. So God forbid, मतलब ये दोनों बैलेंस बहुत जरूरी है. तो अपना पैशन भी कीजिए, अपना पढ़ाई भी कीजिए, और आपको जो करना है करिए. आप अपने पेरेंट्स के सामने खुद को प्रूव कर दीजिए, तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली Yes, the way my parents got convinced कि नहीं चलो करने देते इसको जो करना. And once you're grown up, once you're matured, you yourselves are able to take your own decisions. है ना? Because now at certain age, children come to know कि हमें क्या करना है. अगर कोई भी प्रोफेशन चूज करना, you will have to earn. May it be anything, may it be your passion or your job. Earning तो चाहिए ही. So automatically it comes into your lifestyle or discipline कि नहीं जो भी करना है वो तो पैसों के लिए करना है. But हाँ important है. तो जो चीज हमें happiness देती है, the thing which gives you happiness, why not to select that? Happiness within is very important. Yes. So this is the package of your life. For me, the success is when we go to bed, we should feel satisfied. We should be able to give justice to people around us. अगर मैं डांस क्लासेस भी ले रही हूँ तो if I'm charging people for some classes, तो I should be able to tell myself कि नहीं जो मैं चार्ज कर रही हूँ उनको उतना मैं उनके लिए कर रही हूँ. And if you are satisfied, then you can call yourself as a successful person. Yes, but that needs practice. I totally Yes. agree. बहुत सारी डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि एक भी दिन अगर आपने गैप दे दिया, फिर बॉडी का मोड ऐसे रहता है ना, ऑटोमेटिकली लेजीनेस पे जाता है, फिर वो नहीं होता. रिस्टार्ट करना Yes. बहुत मुश्किल है. So this is a very beautiful message. And now a last line message for our public, so that we can conclude it. As a dancer, I will always be more inclined towards my art form. Do what you love. Do what you love. So we've had a very beautiful discussion. Whatever you love, whatever you're passionate about, follow that path. Together with it, don't let your parents be sad or upset that you don't want to study, and just follow your passion. सबका सुनिए, खुद का भी सुनिए, और अपने आप को प्रूव कीजिए. अगर आपके पास कोई पैशन है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, अपने पैशन को भी साथ लेना है. और सक्सेस डेफिनेटली आपकी है, उसके साथ साथ डिसिप्लिन चाहिए, वरना चीज़ें बहुत मुश्किल है. कोई लकी ड्रॉ नहीं है लाइफ की, आज लग गई कल लग गई, ऐसा नहीं. लाइफ में डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. So I'm sure this would be a very inspirational show, because I also got lots of things from her today. Thank you so much for the insight. It's been a very very beautiful show, and truly I am also very inspired. क्योंकि आप लोग अभी की जनरेशन के हो, आप लोग को ज़्यादा पता है, बिकॉज हम लोग के टाइम पे इतना एक्सप्लोर करने के लिए, इतना कुछ सीखने के लिए नहीं था. बट you all proved in today's world, because you all are very good with the media and stuff, and you all know what is happening around. हम लोग अभी भी उतना detached ही है, because I feel कि हम लोग के टाइम तो कुछ अलग फेज था, इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई हैव लेड माय लाइफ. And I also keep learning and keep moving with happiness and तो अगर आप अपने आप से खुश नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे. खुद की खुशी का भी सोचिए, हैप्पीनेस अपने आप आसपास भी फैलेगी.
So thank you very much, Kiranji. It's Thank been you. wonderful having you here. Same here. Thank you so much. Thank you for your time. Thank Hare you so Krishna viewers. See you soon. Thank you.